Hello guys, what's up there? Welcome to our channel Football Fantasy and Premier League is about to return, La Liga is about to return, Club Football is about to return यार. तो थोड़ा मजा आ रहा है, एक्साइटमेंट है और ऑफ कोर्स वर्ल्ड कप खत्म हो गया है एंड वी लव्ड द मंथ ऑफ वर्ल्ड कप. अच्छा लगा, थोड़ा अजीब लगा क्योंकि हम नवंबर दिसंबर में वर्ल्ड कप दिख रहे थे. बट या ओवरऑल I Hmm. wouldn't say it was as legendary as France 98 or South Africa 2010, but yeah, decent World Cup, and we love the final. Final was a special one. MC Bhai That's is true. in the house. Hello, बोल रहे हैं MC Bhai. Hello MC Bhai. I am sure. Thank you for joining the stream. इतना लेट आज हमने किया है, but हाँ. और यस, तो वर्ल्ड कप खत्म हो गया है, क्लब फुटबॉल है. अग्रिम भाई, इससे पहले मैं आपके टॉपिक्स पे आऊँ, Hmm. आप बार्सिलोना में एक्सपर्ट हो, तो बताइए कुछ एनी अपडेट्स ऑन बार्सिलोना ट्रांसफर जो आपने सुने, एनीथिंग दैट यू हर्ड. एज अ फैन, डू यू फील I दैट बार्सिलोना विल मूव फॉर अ प्लेयर इन जनवरी? no, I don't think so, yeah, because currently, so I think Barcelona has to like fix on their like wage. Abhi there's like Hmm. huge problem of wage. Hmm. Abhi So the latest reports that I came across was like they were planning to place Ansu Fati and like one or Okay. two or more players to on the transfer list. I don't know who are those two Um, players. It may be मेरे हिसाब से तो I think it has to be Dembele or Ferran Torres. hmm. अच्छा. Okay. Otherwise, I don't see like any other like signing happening for Barcelona. I mean, not even like next season. There's no concrete uh, signings happening. Congo. Okay. Christmas Mubarak बोल रहे हैं MC भाई. Merry Christmas to you as well, and Merry Christmas to Christmas, everyone, all of our viewers who are watching this show. Merry Christmas. I guess yeah, Agreem bhai ki baat pe to yeah, most of the things that he said, as I agree to it, because I read a lot about transfers. I keep myself updated, and I haven't Yeah, heard anything about Barcelona. It's just rubbish. Couple of things that that yeah, Barca reporter keeps on saying, but I don't think anything is concrete as such unless we hear yeah, from tier one source. yeah, I'm sure Barcelona would want to sign players not in the January transfer window, but in winter. And yeah, yes, they have received a disappointment. It seems that Leo Messi is going to extend his contract at PSG. That's what I've heard. And Nasir Al Khelafi is confident that he can get Messi to extend his contract, which itself is a good news for PSG fans. hmm. But Yeah, yes, yeah. That's true. overall, not good for Barca, because I think Xavi especially wanted Messi, and he wanted Messi to be the center of the things. But Hmm. yeah, ठीक है यार. There will be a lot of players available, lot of opportunities for Yeah, Barcelona in summer transfer window. Interesting to see how they handle this window, because last window they had levers and all to pull. I'm sure yeah, they're bringing in investment. They're going to show some profit, with other means of yeah, earning. And I'm yeah, sure if it works out, they will sign players. So let's hope, hmm. let's be positive. Yeah. Now moving on from Barcelona, ex-Barcelona player we recently spoke about just now, a couple of minutes back, Leo Messi. You know, what are the chances agreed by Leo Messi wins the Ballon d'Or this time? I mean, it's all on like Mbappe, like Mbappe, if he doesn't want to win the Champions League, so he can purposely make Messi lose the league and Champions League Uh, if he wants to. Because, no, I don't think, because the advantage Messi has that he plays the same club as yeah, Mbappe. So yeah. वो हारा तो दोनों हारते हैं, दोनों आउट हो जाते हैं. But But I I think, think it's a like, very hmm, hmm, yeah. So I was thinking like, like, so both of the players had a phenomenal what do you call tournament, right? Tournament. So I think hmm, this will be a game changer for PSG. I mean, in correct. my It opinion. is. Yeah, Hmm. yeah. Messi So for it. all the teams have, yeah, all the teams have to like watch out for. They're playing But Bayern, na, Agreem bhai, in the Champions League. yeah, They're playing Bayern. Bayern in the Champions League. Yes, yes. But Agreem bhai, अगर आप देखोगे, Messi and Mbappe had a brilliant World Cup. But this season, Yeah, the man in form for PSG was neither Mbappe nor Leo Messi. The man in form is Neymar. Neymar. Neymar is the
is in hot form, this season, hot and form. Yeah, been fantastic this season. And she's the same like 2010, top three Ballon d'Or for the same from the same team. Yeah. yeah. Gavi and But yes, Messi. correct, exactly. But yes, Neymar has had a fantastic season for PSG so far. He could have had a brilliant World Cup as well, for Yeah. if not for that 15 minutes of madness by Brazilian team. Mm, Otherwise, they would have gone far in that World Cup. But yes, nevertheless, yeah. Neymar is the man in form, and PSG overall are looking a good side. Messi is one World Cup, Mm, he will be confident. So will Mbappe. तो यार अच्छा तो होने वाला है ये आने वाला matches. But very yeah. hopeful that PSG win something this time because they've been trying to win Champions League for a very long time. I remember Yeah. from the time they signed Zlatan Ibrahimovic and Thiago Silva. Since that year, their focus has been to win the Champions League. They've gone Mm, all out. They bought Messi, sorry, they bought Mbappe, they bought Neymar, they bought some big players, they bought Di Maria, and finally they bought Messi. So mm. overall, yes, they are a team who will look to win the World Champions League because of Champions their League. star signings and the players that they have. Yeah. But only time will tell. So let's hope uh, Mm, PSG get as to the late stage in the Champions League as possible. तो क्योंकि मजा आएगा, एक अच्छी टीम रहेगी. ये मुझे अच्छा नहीं लगा कि बायर्न और पीएसजी इतना जल्दी मिल रहा है बिकॉज ये टीम सेमीफाइनल में मिलनी चाहिए. तो बिकॉज दोनों टीम yeah. का चैंपियंस लीग में होना जरूरी है. दोनों आर टफ टीम्स एंड Yeah. एंड तक जाएंगी. तो लेट्स सी Yeah. हु गेट्स नॉकड आउट. मूविंग ऑन, Mm, ट्रांसफर के बारे में बात करते हैं थोड़ा भाई. हमारे ट्रांसफर्स तो बहुत ही जनवरी में ज्यादा ट्रांसफर होते नहीं. ओनली एडवांटेज इज very दैट minimum. Yeah. इस बार वर्ल्ड कप हुआ है तो मे Mm, बी थोड़े प्लेयर साइन हो जाए. बट mm. हाँ, वर्ल्ड कप आया But, तो थोड़े प्लेयर. हम्म, क्या बोल रहा? but this is like mid. मैं बोल रहा हूँ, this is like mid season, ना? Mid season, I don't think like any club would make हम्म, that sort of changes. करेक्ट. It will be a use Unless you just are for, desperate. yeah, Hmm. yeah. Unless you're Unless you are desperate, desperate, like like Man United unless and you're Arsenal, Barcelona. these two teams Yeah, are desperate. What did you yeah. say? Unless you are. Now, no, unless if you're Barcelona and you're desperate to like Uh, take financial hmm, hmm. overturn, so then it makes sense. Ah. Yes. No, but there are two teams who are desperate for a striker, Manchester United and Arsenal. Manchester United Yeah, because of the Cristiano Ronaldo situation, and Arsenal because yeah, Gabriel Jesus is going to have a long-term injury. So both these yeah, teams need a number nine, and the problem is yeah. that a top-notch number nine isn't available. If I Hmm. talk about number nine available at the back of my head right now, I think see first of all Cody Gakpo, although he can play as a number nine. I don't think he's a number nine. It will be a fantastic Hmm. signing if Manchester United end up signing Cody Gakpo. But again, he's Hmm. not a number nine striker. Who else is Yeah. available? Memphis Depay, another player who can play in any three positions, Hmm. but Yeah. is past his prime. May not have that kind of impact which Manchester United That would need. impact. Yeah. They want someone. Exactly. They want someone to have the same impact Robin Van Persie had a few years back, and it's very difficult Yeah. to buy that kind of striker in January. Another possible options is the Lille's Jonathan David, but I don't Hmm. think he can bang in that many goals. His work rate is fantastic, बहुत अच्छा स्ट्राइकर है और Hmm. प्रेसिंग अच्छा करता है एंड उसका फुटबॉलिंग इंटेलिजेंस बहुत अच्छा है. बट ही इज नॉट दोज नंबर नाइन्स लाइक सुआरेज, एडिनसन, कवानी टाइप जो बॉक्स के Yeah. अंदर घुस के गोल मार सके. बॉक्स इन द बॉक्स बोले वैसे Yeah. वैसे ऐसे स्ट्राइकर्स नहीं है. तो Yeah. वैसा कोई अवेलेबल भी नहीं है. पीपल टॉक अबाउट दुशान व्लाहोविच, बट अगेन I don't think Juventus would want to let their top Hmm. forward अभी go तो in आया. January. Maybe summer, Yeah. but I don't think it is going to make a sense. Jao Felix looks like an interesting option. Loan. It Yeah. seems I Atletico heard Madrid about को it. लोन Yeah. पे उसको भेजना है. लोन पे भेजना है. Hmm. United, Arsenal are interested in him, but again, not a number Yeah. nine. He is not a number nine. He's more of a wide player. Can also play as a second striker, Hmm. like how Second Wayne striker. Rooney Yeah. used to play. Can play on the Yeah. wings, but यार नंबर नाइन नहीं है वो. तो यही तो Yeah. नंबर नाइन क्या होता है, टॉप प्लेयर्स होते हैं. When you want a top Hmm. striker for a club like United, Arsenal, they want a top player, and those players aren't easily available. Gonçalo Ramos
है, बट आई डोंट थिंक बेनफिका उसको जनवरी में जाने देगा। क्या लगता है आपको? इवन इफ दे पे 80 या 90 मिलियन, मुझे नहीं लगता है वो 80-90 मिलियन वर्थ है भी नहीं नहीं। यार, because they're स्टूपिडिटी। already in the Champions League knockout stage, na? मतलब they have हम्म went through the knockout stage and they have like crucial games coming. So I don't think like Benfica is going to take that risk of either हम्म selling their two best players, Gonzalo Ramos and Enzo Fernandes. I don't think it's possible for unless the financial अगर problems है, then only they can send. एंजो फर्नांडिस के बारे में तो बाद में बात करूंगा मैं, बट या जाओ फिलिक्स, every 100 million signing failed। एमसी भाई, 100 million साइनिंग ओवरऑल बोल रहे हो या कोई किसी किसी क्लब के लिए बोल रहे हो? क्योंकि ये इस सीजन 100 million साइनिंग कौन है? आई थिंक डार्विन न्यूनेज है। Okay, ओके, और कौन है 100 million साइनिंग? Haaland एंटनी। plus 100 हालैंड है plus 63 100 में मिलियन। हाँ, हाँ 63 एंटनी मिलियन है, ना बट आई डोंट ऐसा थिंक। कुछ है। 63 मिलियन प्लस, करेक्ट, प्लस कुछ बोनसेस है, वेजेस। लेट्स नॉट काउंट वेजेस, वेजेस को काउंट करके मतलब नहीं है। अ, वो बोल रहा है इन जनरल, इन जनरल, हाँ, इन जनरल अभी तक तो लास्ट 100 मिलियन साइनिंग कौन है जो सक्सेसफुल हुआ था? कमेंट सेक्शन में बताओ गाइस, इफ यू रिमेम्बर। वी आर आल्सो ट्राइंग टू गैरेथ रिमेम्बर बेल हु वाज 100 मिलियन। गैरेथ बेल गैरेथ बेल। गैरेथ बेल या तो मतलब गैरेथ बेल वाज 2013, तो 2013 से या 2022 तक उसके कोई भी उसके 100 मिलियन वजह से साइनिंग तो सक्सेस नहीं हुआ। मतलब ऑल द मार्केट वेंट ना ना इन्फ्लेटेड ना ना। ना ना ना, मैं बोल रहा हूँ, अगर गैरेथ बेल इज द लास्ट वन, तो मतलब 2013 से 2022 तक एक भी 100 मिलियन साइनिंग चले नहीं है। वही मैं बोल रहा नेमार, आई हूँ थिंक लाइक नेमार उसके। वाज, नेमार क्या नहीं। नेमार वो 200 मिलियन ना हाँ, तो 200 नेमार ने, वी कैन से नेमार। ट्वाइस ट्वाइस हाँ, बट हिज नंबर्स वर लाइक 63 फिनोमिनल मिलियन प्लस 300 मिलियन बोनस फॉर हालैंड। अरे नहीं यार भाई, 300 मिलियन, वो तू जो बोल रहे हैं ना ये लोग, वो 4-5 साल की सैलरी मिला के है 300 मिलियन। तो वो तो गिन नहीं सकते यार, वो तो बोनस बोनस, दैट यू कैन नॉट। वो या एजेंट फी सब मिला के बोल रहे थे 300 मिलियन। तो दैट इज या नॉट फेयर। लेट्स कीप 63 मिलियन। 63 मिलियन इज दी दिस थिंग। एंड और कौन? एंटनी है। एंटनी वाज हैज बीन सो फार डिसेंट। एम्बापे और एम्बापे हंड्रेड वाज मिलियन 180 ना। Yes, एम्बापे yes, वाज Mbappe, another 180 one. He's not. He's. I बट think he's एम्बापे the last एम्बापे signing. या लाइक गुड 100 प्लस 180 मिलियन Correct, correct. साइनिंग He's the last. या I think he's the last signing that was successful. If या back of the सक्सेसफुल head को मैं remember करूँ, तो वो ही एक है। और कौन है? या रियल मैड्रिड ने किसको साइन किया 100 मिलियन पॉगबा के लिए? हजार्ड। पॉगबा हजार्ड। पॉगबा तो 100 नेमार मिलियन मुझे, मैं नहीं चाहता था कि तू मुझे याद दिलाए। मुझे याद था, बट मैंने मुझे बट बता दिया तुमने। नहीं बट यार पॉगबा स्टिल या एटलीस्ट ट्राइड डूइंग समथिंग फॉर यूनाइटेड ना। सबसे वर्स्ट इफ यू आस्क मी वी ऑल नो हु इट इज। फॉर यूनाइटेड, Alexis Sanchez नो by default. नो नो Di Maria, ग्रिलिश ग्रिलिश Gre अच्छा, overall Grealish, yeah, Grealish, yeah. हाँ Another one, yeah, या Grealish, another, yeah. ग्रिलिश मतलब out of nowhere they ask like I mean how Arsenal will are ask 100 million for Grealish I don't know क्या सोच के पैसा मांगा था 100 भाई million मैन सिटी ने दे भी तो दिए, मैन सिटी ने दे भी तो दिए। या अजीब ही है भाई। नेमार CR7 समवॉट, नहीं यार, नहीं, आई डोंट थिंक सो। अरे भाई, और एक नाम CR7 ले को लिया भी भाई। हाँ, एमशे भाई ने और एक नाम ले लिया, देखो। मार्स। कुटिन्हो कोटिन्हो, यस यस, 150 कोटिन्हो। डेम्बेले भी तो हजार्ड। आता है इसमें। हजार्ड डेम्बेले भी भी है है। एडन हजार्ड, डेम्बलेले है, दे आर ऑल ग्रीजमैन नॉट, यू ग्रीजमैन कैंट से। सारे नो, आई एम टॉकिंग अबाउट लास्ट हिट साइनिंग कौन था? आई थिंक एम्बापे ही था, राइट? उसके बीच में किसी ने 100 मिलियन साइनिंग की गुड है? साइनिंग नहीं किया अभी तक तो, राइट? या I एम्बापे ही think था। CR7 for like Juventus when they signed him from Real Madrid 105 million कुछ दिया था ना Real Madrid 92 को। मिलियन दिया था, 92 मिलियन। हाँ कुछ बट वही ठीक है, वो दे वन ट्रॉफीज, दे या वन लॉट ऑफ ट्रॉफीज विद CR7। या स्कडेटो या जीते थे, फिर वो लोग बहुत सारे हाँ चीजें जीते थे, तो ऐसा नहीं, फ्लॉप नहीं बोल सकते। या मैं, या और हिट भी नहीं बोल सकते, ठीक है, ओके ओके, या उनका he was पैसा वसूल हो, all बिकॉज right at Juventus हाँ या आई वाज ऑल राइट, ठीक है, तब तक बराबर था। बट आई एम या टॉकिंग अबाउट सक्सेसफुल साइनिंग, मतलब टॉप टॉप मोस्ट 100 मिलियन साइनिंग वैसा, तो मुझे वही कोई है एम्बापे ही एम्बापा के रहेगा बाद तो कोई याद नहीं एम्बापे है।
कोई याद नहीं आ रहा ना है, ऐसा मुझे भी कोई याद नहीं आ रहा है। ना. लिवरपूल के लिए But कोई था क्या 100 million साइनिंग? somewhat I think Neymar comes close to that 150 million, but I don't know like 222 is like कुछ ज़्यादा है, but 150 पता है हम्म क्यों बोल रहा हूँ? हम्म Because Neymar has actually performed. या Neymar नेमार has परफॉर्म, actually पीएस performed वहाँ पे. मल्टीपल टाइटल जीते पीएसजी यार, मतलब Yeah, आई हाँ. डोंट देयर हम्म इन द लास्ट 8 years 2 बार ही जीते नहीं वो लोग, अदरवाइज तो हम्म. फैंटास्टिक रहे वो लोग, दे हैव बीन हाँ भले वो ब्रिलियंट कितना भी है, but उसके नंबर स्पीक्स यार. नंबर स्पीक्स हम्म और हम्म एंड ऑफ द डे. या एब्सोल्युटली, तो आई एग्री विद दैट एज वेल। और या उसके अलावा और तो मुझे कोई याद नहीं आ रहा है जो एकदम हिट हिट था। ना और कौन 100 से million के क्लब अलावा फुट आई डोंट थिंक एनीवन एल्स. नो आई वही डोंट था. थिंक सो। कोई नहीं, नो वन, तो नो वन, बारसा एब्सोल्युटली नो वन। बारसा ने गोल खिलाए थे 100 million साइनिंग्स के, हम्म और किसी क्लब ने नहीं किया इसके अलावा. हम्म बट एनीवे, लाइक कमिंग बैक, आई मीन व्हाट डू यू थिंक, जाओ फीलिक्स यूनाइटेड का चांस है इसका? मुझे लगता है आर्सेनल जाएगा वो। आर्सेनल जाएगा. मुझे लगता है यूनाइटेड विल बाय कोडी गैक्पो, दे कांट बाय बोथ बिकॉज अगर हम्म कुछ फाइनेंस यूनाइटेड का भी कुछ चक्कर है फाइनेंशियल फेयर प्ले का, तो ज्यादा महंगा हम्म प्लेयर भी ले नहीं सकते, लोग चढ़ चढ़ के हम्म. बोलते हैं ट्विटर पे एंडो फर्नांडिस 120 मिलियन का है। देयर इज नो वे मैनचेस्टर यूनाइटेड कैन बाय, पहले बात तो पैसे नहीं है भाई, डेप्थ में क्लब बहुत, ओनर ने पूरी माँ बंद कर दी क्लब की, अभी दे आर लुकिंग फॉर इन्वेस्टमेंट फ्रॉम आउटसाइड बिकॉज दे डोंट हैव द मनी, या so I don't think या they can afford to buy someone like Enzo Fernandes. So all Enzo या Fernandes rumors are a load of crap, bullshit, utter bullshit है वो। Enzo Fernandes, I'm telling you, एटलीस्ट इस समर तो कहीं नहीं जाएगा भाई, 6 महीने पहले तो खरीदा उसको बेंफिका ने, हम्म. स्टूपिडिटी होगा जाने देना कितना भी मनी, वो उसका 120 मिलियन भी है जो रिलीज क्लॉज, एंड आई थिंक इट्स गेट्स एक्टिवेट ओनली इन समर, 6 महीने में कभी हम्म. एक्टिवेट नहीं होता कोई रिलीज क्लॉज, तो समर में या एक्टिवेट होगा। एंड मुझे लगता नहीं कि जनवरी में तो कोई एंड फ्रंट यूनाइटेड का तो चांस ही नहीं है। 100 मिलियन प्लेयर तो भूल जाओ भाई, पैसे नहीं है मैनचेस्टर के पास साइन करने के लिए। या दैट्स ट्रू. ग्लेजर्स वोंट सेल, तो व्हाई वुड दे बाय? Yes, exactly. They want to sell. Why would they buy? Yes, they see. It's not about leaders. Leaders को तो खरीदना है भाई, बेचना है क्लब को, तो they हम्म. will make sure they bring in the best players, which will attract investors. या So या there is a reason for them to buy players because द अगर आपको याद है, जिस दिन ये लोग ने ऑफिशियल किया था थ्रू एथलेटिक एंड अदर आउटलेट, जब ग्लेजर्स वांट टू सेल यूनाइटेड, यूनाइटेड के स्टॉक प्राइस कितने बढ़ गए थे, मतलब सुपर, मतलब 12 घंटे में इतने जबरदस्त स्टॉक प्राइस बढ़ गए थे यूनाइटेड के। तो सेम वे अगर अच्छे अच्छे प्लेयर लाएंगे तो और बढ़ेंगे स्टॉक प्राइस, अट्रैक्ट दी ओनर्स, हम्म. इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करेगा, दे वांट 6 to 7 billion pounds, which I don't think any wise businessman will pay because 6 to 7 billion pounds तो क्लब खरीदने के लिए, उसके बाद दे हम्म. हैव टू हैव डेप्थ, कुछ अराउंड 1 बिलियन है, वो डेप्थ क्लियर करना है, या प्लस इंफ्रास्ट्रक्चर है क्लब का, ओल्ड ट्रैफोर्ड को रेनोवेशन करना है, ट्रेनिंग फैसिलिटीज नहीं है, या तो यार आई एम नॉट श्योर हाउ, किस मुंह से ये फाड़ के बोले थे। एक तो क्लब को लोगों ने डेप्थ में खरीदा, वो डेप्थ में खरीद के वो क्लब, वो एग्जैक्टली. डेप्थ ही क्लब पे डाल दिया, विच वॉज, आई मीन दे लिटरली बॉट द क्लब फॉर नथिंग, ऐसा हुआ है। So I think हम्म. they will they want to close the deal in the first quarter, but I don't think they या will find a suitable buyer. अगर कोई बहुत लोग खरीदना तो है, मैनचेस्टर यूनाइटेड एक फुटबॉल क्लब से ज्यादा एक ब्रांड है, ऐसे हम्म. यूनाइटेड है, रियल मैड्रिड है, बार्सिलोना है, ये अगर लिवरपूल है, ये या सब या ब्रांड है, और मैनचेस्टर यूनाइटेड, स्पेशली मैनचेस्टर यूनाइटेड के बारे में अगर किसी भी तुम जो फुटबॉल फैन नहीं है, मतलब जो बेसिक भी जानता नहीं फुटबॉल के बारे में, उसको वो क्लब फुटबॉल के बारे में पूछोगे कौन सा क्लब जानते हो, वो मैनचेस्टर यूनाइटेड का नाम ही रहेगा, क्योंकि वो हाँ नाम मतलब इतना वो तो बार मुंह पे आता है। रहता ही है. या हाँ, वो वेरी मुंह पे पॉपुलर रहता ही है, रहता है. तो दैट्स हाउ एग्जैक्टली. इट्स मोर ऑफ अ ब्रांड। तो बाइंग या खरीदने के लिए बहुत सारे लोग खरीदेगा, आई हर्ड Amazon वांट्स टू बाय, एप्पल वांट्स टू बाय, बट नो वन विल डू अ स्टूपिड डील, मतलब या खरीदना है इसके लिए कोई भी कुछ भी पैसा नहीं देंगे। आई थिंक दी सऊदीज एंड दी दुबई बेस्ड एमिरेट्स आर इंटरेस्टेड या द मोस्ट बड़ा इंटरेस्ट है, बट अभी देखते हैं इनको कैसे बेचना है, इनको अमेरिकन को ही बेचना है या फिर इन्वेस्टमेंट लाना है, यार. आई वांट देम टू सेल द क्लब, हम्म. बट यार। यार मेरे हिसाब से पता, आई मीन लाइक नथिंग हेटेड टुवर्ड्स अमेरिकन, बट लाइक handing them, I mean like handing over to like American owners, they're like least bothered about football, because
Same बिल्कुल goes भी like नहीं. Liverpool के owners are also like exactly like Glazers only. Unless somehow they spend because they have Klopp. I mean, till the time Correct, you guys had correct, like correct. yeah, you guys had like Sir Alex Ferguson, so at least थोड़ा बहुत तो transfer होता था ना. And Sir Alex Correct, correct. Ferguson's mentality and was something Hmm. different back then. Hmm. And अभी Correct, I correct. don't know like how much support No, this guy will get. it's not Ten Hag. just it's not just Sir Alex. उनके साथ जो चीफ एग्जीक्यूटिव था, David Yeah, Gill, he was fantastic, brilliant था, yeah, and they had a very good scouting network. They used to get players for very cheap. So if you look hmm, at the player that they bought, Nani, Antonio yeah, Valencia, these players that's were true. well scouted and bought. After Sir Alex Hmm. retired, there was no strategy. Yeah, David Gill also left. He with Sir Alex. Ed Woodward came. We all know how that's turned out to be. So yes, Manchester United तो they are crying out for a very good owner. And लोग बोलते हैं कि ये कतारी बेस्ड या सऊदी बेस्ड या दुबई बेस्ड होना नहीं चाहिए एथिकल रीजंस के लिए ये नहीं वो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता एज अ यूनाइटेड फैन mm, अगर मैं सच बात बोलूं आई वांट दीज गाइस टू कम बिकॉज ये yeah, क्या मालूम है दे विल नॉट रन द शो they want their yeah, business to be successful they will hire the right yeah, people to run the show that's their idea yeah, if you look at Man City का business model you know अगर उन्होंने right people को hire किया है yeah, run the football. That's how it should be, and that's why I want these Middle Eastern guys to buy the club yeah, because they will hire the right people, who are yep, good enough to run the club. तो ये yep, that this is sole purpose. Americans को क्या है बैंकर्स और लॉयर्स को हायर कर देंगे और मतलब कुछ hmm, भी क्लब के अंदर के जो लोग हैं जो मुंह नहीं खोलेंगे उनको रख yeah. देंगे टू हैंडल स्पोर्टिंग डिसीजंस एंड इट विल अगेन बी द सेम ओल्ड मैस दैट्स व्हाट Yeah, but एंड आई थिंक वो लोग कैसे रहते हैं very conservative approach वाला वो game खेलते हैं Americans, like वो लोग I know. ज्यादा they will prefer अगर ये this would have been a baseball team तो मतलब they would have spent millions and millions on Correct. them. But Correct. लगा this is not their actual sport ना, so उतना Sport, correct. वो नहीं रहेगा उनका. तो Yeah, फुटबॉल ही that's what I'm बोलते saying. नहीं है सॉकर बोलते हैं इसको Exactly, हाँ. हम्म. तो उनका वो अदानी उतना वो फेवरेटिज्म नहीं रहेगा मेरे को लग रहा है towards football. But anyway. Adani bought Man United so that I can't enjoy football anymore. Raja Ravish Kumar. ये तो मजा आ ये जाएगा. हमारे रविश कुमार जिसकी बात कर रहे हैं वो ये, जो हाँ मीडिया रिपोर्टर उसकी बात कर रहे हैं ही इज जॉइंड हाँ एनडीटीवी कोई कोई एक्स एनडीटीवी कांग्रेस पार्टी रिपोर्टर है ना. कांग्रेस अभी उसने कांग्रेस पार्टी से ज्वाइन किया है पॉलिटिक्स में भी आ गया वो ज्वाइन कर लिया आई नो. हाँ नॉट श्योर आज मैं अबाउट इट. किधर देख पढ़ दिख रहा था मैं तो हाँ गुड फॉर हिम. ठीक है बैक टू फुटबॉल या. और या सो Felix, Jao Felix, I think Arsenal जाएगा and Cody Gakpo looks like it is going to happen. Personal terms are already agreed. They were already agreed in summer. It was just a matter about agreeing a fee with PSV Eindhoven, which I think United will agree. They will come to terms. या. What उसमें मुझे लगता है कि क्लॉजेस बहुत सारे होंगे एड-ऑन्स में बोनसेस सब ज्यादा सेल ऑन क्लॉज सब होंगे हम 35 to 40 million में उसको बाय कर लेंगे but there will be a lot of add-ons and sell-on clauses. Maybe that will take it to 60 million. That's what I believe. But yes, Cody Gakpo is going to sign. So मुझे as a Manchester United fan, I wanted a number 9. Cody Gakpo is not that type number 9 player. But अगर Eric Ten Hag wants him, so then I feel that's the right player. जो Eric Ten Hag बोले वही होना चाहिए या. because he has to run the show. He is the player. He is the manager, and he should get the player that he wants. Club needs to back him या. properly. Cody Gakpo, the Cody Gakpo. He doesn't want Jao Felix, तो नहीं चाहिए Jao Felix. Yes, so I think that's what Jao Felix mostly जाएगा Arsenal loan पे with an option to buy होगा and let's see how that works out to be because Simeone का style of play hasn't suited Jao Felix and more of a creative player है so I think maybe Arteta style will suit him pressing अच्छा है उसकी and की awareness भी बहुत superb है so I think Jao Felix coming to Premier League will be fantastic and moving on to the next topic, what's up with Sancho, say Ramsey? It's very disappointing to see, where Sancho's career turned out to be. We spoke about it in the last video as well, his fitness levels are not up to the mark, and
He's gone to Netherlands to get trained and up his fitness levels, but that hasn't worked out. I even heard somewhere that if this doesn't work out, uh, Ten Hag may send him for a loan for 6 months. So Hmm. wasn't Sancho 100 million? No, Sancho was 73 million. Hmm. 25. Sancho was 73 Yeah. million. So yes, I Hmm. think Pogba was the most expensive United signing. I think Anthony is right now. I think so. It's Pogba, Anthony, and Harry Maguire. Three signings which are above 80 million for United. So we all knew how Pogba and Harry Maguire turned out to be. So let's hope Yep. Anthony doesn't Mm-hmm. Anthony doesn't go the same way and for now उसका Hmm. start बहुत promising रहा है and I think he is going to be a fantastic player. If you look at that game against Croatia as well, when Anthony came on, he made a difference. वो बहुत trouble कर रहा था Yeah. उनके left back को. So I think he's a fantastic player, That's true. and I think Ten Hag is the right coach. And till the time Eric Ten Hag is Manchester United manager, I think Anthony will do well. Yes, Hmm. so yes, Sancho के बारे में बात कर रहे थे. So let's hope that he gets back his fitness and starts playing for United and gives us the same performance as he used to give at Borussia Dortmund. So Hmm. up next on transfer, Ronaldo to Al Nassr. ये बहुत chances है होने को. क्या लगता है आपको? Ronaldo is out of options. Al Nassr has offered him a very good Hmm. deal. Do you think it is going 7 to years का happen? कुछ I बोले ना? now feel 7 years. हाँ I 7 years now कुछ feel that बोले थे this ना? will happen. मुझे ऐसा लग रहा है कि होगा. Hmm. आपको क्या लगता है कि और कुछ ट्विस्ट है स्टोरी में रोनाल्डो की स्टोरी में या फिर वो जाएगा अल नसर ही? Yeah, I think yeah, मतलब I don't know यार. Like I'm not sure. Like any team in the Hmm. European area, like region, probably wants him because his wages are like so high. Nobody can afford him. Correct. So I think the Correct. the best option for him would be like going to a club where he can enjoy like rest of his playing career, Hmm. or maybe Hmm. try like one more what do you call tournament as like such as Euros for Hmm. like a proper send off, so that can be like his last. I mean, I just feel bad for him. उससे ज़्यादा I don't या द प्रॉब्लम can't उसका do ये है anything. कि इट्स नॉट जस्ट अबाउट दिस. उसका वेजेस भी नहीं है उसके साथ अभी जो उसका इश्यू हुआ मैनचेस्टर यूनाइटेड में Hmm. एज अ प्लेयर एंड देन एट द वर्ल्ड कप में भी हमने देखा पोर्चुगीज साइड के साथ some of Yeah. his behavior was not acceptable. So Yeah. creates a havoc in the team. He still believes that he can score. He can be a top player and make an impact and score those goals. But the managers don't believe that. They feel that he is someone who Hmm. can do a makeshift job and contribute towards the team, but not be the Yeah. main man. So that's what he's not ready to accept. Maybe he still believes that he has it in him, and maybe which is right, but when you're playing at a top club, you have to listen to the manager. And That's true. only thing that you can do is if you want to be the main man, and if you lost the confidence of a manager, the best way to do is Yeah. keep quiet and answer it on the pitch. Whenever given a Yeah. That's chance, the best score option. goals, do your best, and it will work out. No Yeah. manager wants to keep a player on the bench if he's going to perform Yeah. consistently. If you're performing consistently, any manager, be it Ten Hag, be it Mourinho, manager with the biggest ego, if you are a match winner in your Hmm. team, and if you are just doing your job, not creating havoc, he will definitely start you. वो क्यों स्टार्ट नहीं That's करेगा true. तुमको? That's true. तो ये प्रॉब्लम है रोनाल्डो की अभी. Let's see if he is actually. I feel that the Al Nassr thing will happen now, most likely to Hmm. happen, and Al Nassr club are itself confident that they can wrap up the deal before 31st of December. तो Yeah. देखते हैं क्या होता है. वैसे भी they want him to be the brand ambassador for the 2030 World Cup, ना? Yes, yes, absolutely, absolutely. That's what it is. They want him Yeah. to be the brand ambassador. So, let's see how that turns out to be. Uh, Hmm. interesting, but I'm not sure whether you watched the game between United and Burnley. Casemiro plays as Hmm. center back for United. There's no Varane. I think he's Hmm. recovering. Richa Martinez Yeah. is celebrating. Uh, Harry What? Maguire I think, has injury issues, some fitness issues, so अच्छा. hasn't started. And his absence, I think, mm, you know,
Casemiro did a brilliant job. So your thoughts on that? Just because it was Burnley United got away with it, or is it going to Yeah, affect them in the Premier League? They will need a centre back. What are your thoughts on this? I think like post, I think like first week of Jan miracles. I think Lisandro Martinez will come back and Varane to आ ही जाएगा. So I don't think like if Casemiro will be playing as Hmm. a rolling center back because it makes no sense because you need him on the main central pivot of your midfield. Correct. Correct. Yeah, Correct. because that is his like preferred position, right? So you cannot mess around where he plays. Unless if you get down, then you can do both. You can play him Yeah, as you a can center do back both. and yeah. So, but playing Casemiro at the age of 30 as a center back makes no sense. Yeah. So let's see how that turns out to be. Yeah. Boxing Day, Manchester United playing against I think Nottingham Forest. Nottingham Forest is Hmm. the opponent. I think they're not playing on Boxing Day. They are playing on 27th. Boxing Day games are between, I'll tell you which are Boxing Day games. Yeah, so Boxing Day games, Brentford, Tottenham, Palace, Fulham, Everton, Wolves, Leicester City, Newcastle United, Southampton, Brighton, and Aston Villa, Liverpool. Then we have a late kickoff on that day between hold on, the Newcastle, no, sorry, Arsenal and West Ham United, which is going to be a fantastic game. And then on 27th, we have Chelsea, Bournemouth, and late night kickoff, United Tottenham, not United Nottingham Forest. तो यस दीज आर द Hmm. फिक्चर्स तो अगर भाई ट्रांसफर पे तो बात कर ली है तो प्रीमियर लीग के बारे में बात करते हैं लेट्स स्टार्ट Hmm. विद आवर मोस्ट इंटरेस्टिंग गेम ऑफ दैट वीकेंड that's between Arsenal and West Ham at the Emirates. Do you think West Ham stand a chance, or I think, or it's Arsenal going to walk away with 3 points Hmm. again? क्या लगता है आपको? Hmm. So Arsenal versus West Ham है ना? So हाँ, Arsenal's at Emirates. last 5 games अगर देखोगे so they have been convincingly beating West Ham. So it has been Yes, an yes. easy fixture for them. So I don't know. So I think probably Arsenal might just go through because they have that advantage, of Hmm. staying at the top of the Filal. So I Hmm. think they might just get. And what is the position of West Ham, Abhi Filal? West Ham, They hold are on. on West 16th, Ham 16th, है ना? 16th position. 16th. Yes, yes. They So haven't had a good season. Yeah. yeah, so they already have like 9 losses. So मेरे हिसाब से I think they will actually struggle again And they're playing at against Emirates. Arsenal. Yeah, even though yeah, that's one more point. So I think they will तो have a आई tough थिंक time. मेरे मेरे को लगता है इवन गैब्रियल जेसस नहीं है तो भी 3 गोल तो मारेंगे आर्सेनल 3-0 टू आर्सेनल इज व्हाट Yeah, आई फील yeah, they have योर थॉट्स Martinelli, na? Saka, या hai na? They have Saka, Martinelli. So they have like good like wingers. And Saka is having a good season. I think. कितना गोल मारा है इस बार वो ये ये सीजन. बुकायो साका लेट मी चेक हाँ, तो let me just check. मेरे को भी देखने दे बुकायो साका स्टार लुक एट आर्सेनल बुकायो साका हैज हैड 6 असिस्ट 6 असिस्ट किया उसने Hmm. एंड गोल्स Hmm. उसने उनका उनका टॉप स्कोरर है ओडेगार्ड है विद 6 गोल्स Odegaard. and Odegaard. Bukayo Saka scored 4 goals, 4 goals and 6 assists. Not bad, not Hmm. bad. Yeah. तो and absence में मुझे जानना है who will play. एडी एडी एनकेतिया है स्ट्राइकर. हाँ, तो हाँ, एनकेटिया आई थिंक अगेंस्ट यूनाइटेड या चेल्सी के सामने ही स्कोर्ड ब्रेस ना दिस लास्ट सीजन. सीजन आई थिंक ऐसे तो लास्ट सीजन हाँ, towards the end of तो the last season. He scored, एनकेटिया he scored. Correct. या आई थिंक ही माइट स्टार्ट और प्रोबेबली निकोलस पेपे खेलेगा आइदर ऑफ देम. निकोलस पेपर तो लोन पे गया थी. अच्छा लोन पे गया क्या? आई एम नॉट कीपिंग इन टच. हाँ निकोलस तो पेपर तो लोन पे गया है. तो उनका स्क्वाड देख लेता हूँ निकोलस ना, स्क्वाड में पेपर स्ट्राइकर कौन है. तो लाइक ये एमएल एंड स्मिथ रो तो इट्स ये गोइंग टू बी एनकेतिया स्ट्राइकर मार्क एनकेतिया विनोस खेलेगा. करके भी क्या है, दे हैव सम प्लेयर हाँ कॉल्ड बट बट ही इज वो 19 इयर्स ओल्ड. मोर ऑफ एन अटैकर हम्म. अभी इस सीजन ही लिया लोग ने मोर ऑफ एन अटैकर. हम्म. बट या आई थिंक इट इज गोइंग टू बी एनकेटिया. ही इज द मोस्ट लाइकली टू स्टार्ट इन दैट पोजीशन.
मार्किन्योस तो भी है, इनका फ्रंट बट आई थ्री थिंक फ्रंट एनकेटी है. थ्री यही रहेगा। हम्म, हाँ, फ्रंट थ्री यही रहेगा हम्म. आई थिंक। क्या नाम है इसका? एनकेटिया Saka, एज Martinelli, स्ट्राइकर। एनकेटी है. या Saka, Martinelli, and then Odegaard is या number 10. Odegaard as number 10. Yes, So yes. I So I think think three. they should be having a problem वहाँ पे। बट एंड मुझे प्लस लगता है 3 पॉइंट्स तो आराम से हो जाएंगे. 3 पॉइंट्स तो आराम से आर्सेनल को मिल जाएंगे. 3-0. आई एम टेलिंग यू ना, 3-0 इज वेरी इजी स्कोर. आराम से आर्सेनल जीत जाएगा. द काइंड ऑफ फॉर्म आर्सेनल आर इन, I don't think it should be an issue. But again, we are coming back after a break, long World Cup break. या There will be some या players नेवर missing. नो। Sal Saliba is missing. Gabriel Jesus is missing. So anything can happen. Zinchenko is also बहुत missing। Zinchenko भी is correct, also correct. like West Ham not के with प्लेयर ज्यादा injury। फ्रेश है. या वेस्ट हैम के प्लेयर ज्यादा तो फ्रेश है. तो उनके पास ये है ना, पाकवेटा है ना, लुकस पाकवेटा। पाकवर्ट, हाँ पाकवर्ट है. हम्म तो so but I that is think one player can। yeah। I हम्म still feel Arsenal will win this game. मुझे लगता नहीं कोई भी तकलीफ हाँ होगा आर्सेनल को, बिकॉज बहुत ही हाँ। अच्छे फॉर्म में है. एंड एज अ टीम दे आर प्लेइंग वेल. yeah, that's true, So that's true। so next good game, I feel, I think it's between Aston Villa and Liverpool at Villa Park. Una Emery, Aston Villa, who beat United towards the end of the break, before the break, and who are looking fantastic. So, and Liverpool are struggling. They lost the Carabao Cup game against Man City. yeah, So, Man and City। the majority of the players played in the World Cup. So Aston Villa players are much fresher compared to Liverpool players. So, and it's at Villa Park. yeah So do you think Villa has a chance, or Liverpool will scrap through? Because लिवरपूल के भी मोहम्मद साला ने वर्ल्ड कप खेला नहीं है, तो वो भी फ्रेश होगा. क्या yeah लगता है आपको? See, currently they don't have Martinez now, so Martinez could have actually been a difference for Aston Villa, you know। Mar- uh, but I don't think like their backline is very weak. Villa's Hmm. backline is very weak, and plus they don't have like a good run seemingly with what Gerard has had. He's been sacked right after like 7 or 8 games. Ah, So I don't think it's very easy for Unai Emery to bounce back against Liverpool, because even Liverpool is hmm. having a very tough season. करेक्ट. लिवरपूल का भी टफ सीजन है, बट आई थिंक Yeah, मुझे लगता है ड्रॉ होएगा ये. 1-1. दैट्स माय गट फीलिंग. 1-1। 1-1 ड्रॉ. या व्हाट डू यू थिंक? Hmm. आपको क्या लगता है? I मेरे को लग रहा है लिवरपूल will score 2 goals, and possibly before Hmm. the stoppage time, Aston Villa will score one. Okay. 2-1. 2-1 to Hmm. Liverpool. It 2-1। makes sense. Hmm. Yeah. Could Yeah, can happen, but yeah, let's see. yeah, How that works out. Aston Villa also yeah। have a lot of players missing. I think Jacob Ramsey Hmm. नहीं है उनका Jacob midfielder. Ramsey नहीं है। That's Jacob true। Ramsey नहीं है. They don't have that their goalkeeper with them. So Yeah, again, Robin Olsen will start, is likely to start yeah, ahead of Emiliano Martinez. तो देखते हैं yeah, अगर that's क्या true। होता है. But yes, Yeah। उनका आई थिंक डिएगो कार्लोस भी नहीं है प्रेसिडेंट डिफेंडर, वो भी इंजर्ड लग रहा That's true। है. Leon Bailey, Leon by BN के पास they हाँ, have लियोन भाई है, फिलिप कोटिन्यो है, बाबूकर कमारा है प्लेयर्स ये तो उनके पास अच्छे अच्छे है. मैटी कैश खेल रहा है क्या इनके इसमें? हाँ हाँ, है ना, मैटी कैश तो मैटिकेश खेलता अवेलेबल है, अच्छे रहेगा। है. हाँ, हाँ, हाँ मैटी अवेलेबल है, कैश वेरी पोलैंड अच्छा का है। था ना वो तो. हाँ या अवेलेबल रहेगा वो. तो वो शायद अवेलेबल रहेगा। ये इनका बैकलाइन में हम्म. तो ये रहेगा, टायरन मिंग्स, कैलन चेम्बर्स रहेगा, टायरन मिंग्स मैटी कैश। और कैलम चेम्बर्स. या करेक्ट, करेक्ट. मैटिकेश हाँ रहेगा. बराबर, बराबर, हाँ, तो बराबर. बट इनका इट्स नॉट अ वेरी कन्विंसिंग व्हाट यू कॉल डिफेंस। इट्स वेरी इजी टू पेनिट्रेट डिफेंस देम। अच्छे हैं. या 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 बट अनदर आई बिग थिंक। गेम. बोलो बोलो, क्या बोल रहे मैं थे? बोला था ओवरऑल तो आई थिंक लिवरपूल शुड एक्चुअली विन एंड हम्म. start a season like on a positive note, unless हम्म. Villa goes mad, then they can go for the win। No, let's hope. Let's hope. Liverpool, win and they get back Yeah, to winning ways, because Liverpool का भी बहुत struggle है. If they don't yeah, Bucks pull up the socks now, they might miss on the Champions League spot. So which they would not mm, want to do. But again, let's see. How that turns out to be. Another
I'm just talking about big games. There are a lot of games, but Yeah. I'm just doing a recap, review on preview on the big games. Another big game is between United and Nottingham Forest. Nottingham Forest have bought a Hmm. lot of players. They sacked the manager Yep. now, the new manager. Do you think they stand a, half decent chance Nottingham against? Forest Sackington. That Yeah, Steve, कब सेट किया दूसरा उसको? मैनेजर है ना अभी उनका मैनेजर अभी दूसरा है। Is it? नहीं, स्टीव हम्म कूपर ही है अभी भी। अभी भी स्टीव कूपर ही इसके है। ऊपर ही है। हाँ, स्टीव Let me कूपर ही है। check. They have not sacked. I think he got Yeah, yeah, his not sorry, not contract sack, renewed. not Contract sack. renewed. Got his हाँ, कॉन्ट्रैक्ट contract रिन्यू। renewed. हाँ, contract renew करा था। Yeah, ओके ओके, yeah. But इनका भी इंटरेस्टिंग। yeah, their like difference is like 50-60% तो इनका इंजरी है ये players. Yeah, at that defense. हाँ, या because they're going to have बहुत a इश्यू है। tough time. Yeah, I don't know like how they're going to manage. Yeah. डीन एंडरसन नहीं होगा कल, आई थिंक। डीन एंडरसन कैनॉट प्ले Hmm. अगेंस्ट हिज पेरेंट क्लब, तो डीन एंडरसन नहीं होगा। आई थिंक वेन हेनेसी इज द गोलकीपर। और उनके डिफेंस में कौन है? सर्ज ऑरियर है, और Hmm. फिर ओमार रिचर्ड्स है। Yeah. ठीक है, इतने कुछ। ये विली बॉली है। ठीक है, इतने। रेनन लोडी है, रेनन लोडी विंग बैक भी है उनके पास। Yeah. मिडफील्डर From उनका को Atletico लिया ना? From Atletico. करेक्ट करेक्ट, एटलेटिको से लिया। Hmm. Hmm. मिडफील्ड में कुयाटे है, लिंगार्ड है, कॉलबैक है, मॉर्गन गिब्स वाइट है। एंड Yeah. अटैक में इमानुअल डेनिस है। एंड आई थिंक Brennan Johnson. टाइवो। Brennan Johnson खेलता है ना? टाइव हाँ, Hmm. ब्रेंडन जॉनसन भी Sam खेलता है। Surridge. Sam Surridge भी खेलता है उनके लिए. लेट्स सी, आई थिंक यूनाइटेड विल गो थ्रू, दिस शुडंट बी अ प्रॉब्लम फॉर यूनाइटेड। Yeah. Big playing at Old Trafford, and now most of the players have got their home game against Burnley. Fernandes, Yeah. Rashford, Casemiro, Eriksen, सब ने अपना यू नो ये कर दिया है, वार्म अप कर दिया है। Hmm. तो अभी मुझे लगता नहीं कोई इशू होना चाहिए, और राइट गेम है। Before Yeah. after the World Cup break, this is the right game for United, because they wouldn't want to play away at Aston Villa or Leicester। ऐसे ऐसे डिफिकल्ट गेम्स नहीं चाहिए था। इसका मतलब राइट Hmm. स्टेज। Before Yeah. we leave, last game, Leeds United और Man City at Ellen Road। लीड्स यूनाइटेड Ellen एंड एंड Road. में बहुत सारे रिजल्ट पुल किए, अगर आपको याद है। तो एंड एंड में बहुत Hmm. सारे अच्छे अच्छे रिजल्ट पुल किए Yeah. उन्होंने। और आई नो मैन सिटी आर इन टॉप फॉर्म, एंड हालैंड इज फ्रेश एंड एवरीथिंग, बट मुझे लगता है कि ये इतना इजी नहीं होगा सिटी के लिए। That's over my gut feeling says Leeds City का United will give them a just run for money. yes, City Hmm. का I just saw the last two games against Leeds. एक में Hmm. एलन रोड पे they scored 4 goals I and remember at that. I know. yeah and at Etihad they scored 7. वो 7-0 में तो this guy I, got sacked ना, क्या नाम है इसका? बियल्सा हाँ ये बियल्सा got बीएस sacked. लाहौर। So इनका वैसे भी how हम्म इनका टेबल का रैंकिंग क्या चालू है इस बार? They are on 15th again. वापस वही मिड 15, टेबल पे but ही है वो लोग भी. they beat they were the but they are the first team to beat Liverpool at Anfield in Yeah, a very long Anfield. time. Yeah, Very long time. yeah, exactly. But yeah, like looking at City squad, I don't think yeah nobody is able to नहीं beat नहीं, that City. मुझे भी लगता है। एमशे बोल रहा है मेरी क्रिसमस ऑन बिहाफ ऑफ मेसी एज हिज हैंड्स वेर बिजी होल्डिंग द ट्रॉफी। अरे वाह। Congratulations to बिफोर him. बिफोर मैं आगे बढ़ू, एक स्मॉल अपडेट गाइस के लिए। वी आर गोइंग टू चेंज द नेम ऑफ आवर चैनल, सो गाइस योर सजेशन वुड बी वेलकम। प्लीज लेट अस नो इन द Yes. कमेंट सेक्शन, एंड वी विल श्योरली कंसिडर। तो ये अग्रिम भाई, आपको क्या लगता है विच इज गोइंग टू बी द गेम ऑफ दिस वीक? वीक 17 का सबसे बेस्ट गेम Week कौन सा होने 17. वाला है, क्या लगता है? हाँ। मेरे को एक्चुअली वही लग रहा है आई थिंक क्या नाम है इसका? What what's the game I was talking about?
लेस्टर न्यूकासल विला कैन बी अ सरप्राइजिंग, मेरे को लग रहा है लेस्टर न्यूकासल कैन बी अ सरप्राइजिंग लेस्टर गेम। न्यूकासल न्यू हाँ या नहीं हो सकता है बिकॉज लेस्टर आज या वेस्ट एट द एंड थोड़ा थोड़ा प्रोग्रेस कर रहे थे. दे डिडंट हैव अ या पर्टिकुलरली गुड स्टार्ट टू द सीजन, बट अभी थोड़ा प्रोग्रेस कर. बट दैट्स ट्रू। न्यूकासल एक अलग ही फॉर्म में यार. न्यूकासल इज ऑन या प्लेइंग अ टॉप लेवल. बट अगेन द एडवांटेज ऑफ नॉट playing together for last month and half, एनीथिंग कैन हैपन. तो बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल वीक होगा ये. नॉर्मली या हम आराम से प्रिडिक्शन कर लेते हैं, बट ये क्या है, वर्ल्ड कप के बाद रिटर्न कर रहे हैं. कौन कैसे फॉर्म में है, कितना कौन फ्रेश या लग रहा है, कितना या वो एक बहुत बड़ा डाइसी सिचुएशन है. तो वो हमको मंडे ही दैट्स मालूम ट्रू। पड़ेगा. बट आई थिंक इट विल हैव अ इम्पैक्ट. थोड़ा गेम्स पे इम्पैक्ट करेगा मुझे लगता है. एंड आई थिंक देयर हम्म। विल बी फ्यू सरप्राइजेस. सो माय गट या फीलिंग सेज दैट देयर विल बी फ्यू सरप्राइजेस. तो आई थिंक आप जैसे बोल रहे हो, लेस्टर और न्यूकासल इज वन ऑफ द गेम दैट कुड या हैम्पर. मुझे मुझे भी यही लगता है. लेस्टर में पूरा हम्म। 1-0 विन ओवर न्यूकासल. यू नेवर नो. या एंड they've got the या players. बिकॉज टिलेमेंस, मैडिसन, बार्न्स, अच्छे या अच्छे प्लेयर है उनके पास. तो या ऐसा नहीं कि नहीं है उनके पास अच्छे प्लेयर. ऑफकोर्स वाड़ी भी है. तो देव गॉट फैंटास्टिक प्लेयर. तो लेट्स सी. लेट्स होप दिस वीक टर्न्स आउट टू बी अनप्रेडिक्टेबल एंड फन, मजे वाला. बिकॉज हम क्लब क्लब फुटबॉल ऑलमोस्ट 2 महीने के बाद दिख रहे हैं. तो हमको आई एंटरटेनिंग नो। वीक चाहिए हमको. कुछ आई नो यार। एंटरटेनिंग होगा, कोई मसालेदार धमाकेदार हम्म। वीकेंड होगा तो मजा आएगा. वरना तो या यार एग्जैक्टली। सेम वही चीजें देखना नहीं है हमको. यस, आई एम एग्जैक्टली। एक्सपेक्टिंग Aston Villa Liverpool game to be a dicey one. Watch out for that game, and also look हम्म। out for the Leeds and Man City game. Don't think that या Man City ऐसा ही जीतेगा. मुझे लगता है वो one of the games to watch out. And of course the Leicester Newcastle game. So these three games are the games to watch out for. In the coming fixture. And uh, अगर भाई कौन सा गेम का लाइव स्ट्रीम करना है. न्यू नेम. देख, न्यू नेम रॉनी पुट योर वर्ल्ड कप ट्रॉफी ऑन द टेबल. ओके. कैन गो विद क्लासिक एम्बापे की बात. गुड वन. हाँ. तो आई थिंक बॉक्सिंग डे को वी कैन डू द लास्ट टू गेम्स इफ यू वुड लाइक. the Villa Liverpool and Arsenal West Ham. We can हम्म। either do both or we can do one of them. So my suggestion would be Villa, लिवरपूल। Liverpool, and हम्म। if we have time, if it's possible, we'll do the Arsenal West हम्म। Ham also at 1:30. So Villa Liverpool is at 11 p.m. and Arsenal West Ham is at 1:30 a.m. So we can do that. सो सो टुमारो ना, टुमारो बता रहा है तो मतलब मंडे, मंडे, मंडे 11 Monday, पीएम Monday, Monday, बेसिकली। Monday हाँ 11 हाँ, p.m. तो कर Yes, सकते yes, हैं, हाँ वी कैन डू दैट ऑन मंडे। yes. So Monday कर 11 सकते p.m. हैं। 10:45 will start, या and then the next one will be या Arsenal West Ham. If हम्म। things time permit, we will definitely do that one as well. We would like to do या that one. So mega watch along कर सकते हैं हम लोग. And then of course will Manchester United का game का तो definitely I'll do, and Agrim Bhai will join. तो बस या एक्साइटिंग मजा आने वाला है, क्योंकि ये बहुत सारे हम्म। गेम्स अभी होने वाले हैं. फटाफट 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 गेम्स होंगे. बहुत सारे वॉच अलॉन्ग होंगे. और मुझे लगता है ये जो 1.5 महीना फुटबॉल नहीं खेला है, बहुत इफेक्ट होने वाला है प्रीमियर लीग के. इस पे टॉप 4 कंटेंडरशिप में थोड़ा बहुत इफेक्ट होगा ये वर्ल्ड या कप. लेट्स सी किसको ज्यादा या अच्छा इफेक्ट करता है, किसको बुरा इफेक्ट करता है. वो तो अगले 1 महीने में मालूम पड़ेगा. एंड देन ऑफ कोर्स फरवरी में हमारा बिग गेम है. तो वो गेम में तो दोनों लेग में मैं और अग्रिम भाई लाइव रहेंगे. बार्सिलोना वर्सेस यूनाइटेड. यूरोप वाली गेम. यस यस तो यस। यस मेरे को तो लग रहा है यार बहुत डेफिनेटली सुपर फटीग होने वाला है यार, बिकॉज दे मजा ऑलरेडी आने वाला है. प्लेड द वर्ल्ड कप। हम्म, बहुत. हाँ, मेरे को लग रहा फटीग है तो तो। होने वाला है. आई थिंक जिस जिस या टीम के पास स्क्वाड डेप्थ है, वो टीम या विल डू बेटर. जिसके पास स्क्वाड या डेप्थ है, लाइक सिटी है, उनके पास स्क्वाड डेप्थ है. लिवरपूल डोंट हैव स्क्वाड डेप्थ. लिवरपूल का इश्यूज बहुत है. तो या लिवरपूल को बहुत ही प्लानिंग से खेलना होगा. दे विल हैव टू मेक श्योर दे प्रोटेक्ट द टॉप प्लेयर्स. छोटे छोटे गेम्स में उनको स्टार्ट नहीं हम्म। खिलाए. एंड they've got lot of issues. ऊपर से लुइस डियाज को लॉन्ग टर्म इंजरी है. तो लिवरपूल हम्म। को बहुत संभालना होगा. बिकॉज उनके पास इतना स्क्वाड डेप्थ भी नहीं है. सब छोटे छोटे यंग यंग प्लेयर्स है. तो दे हैव टू प्रोटेक्ट देयर प्लेयर्स. बड़े बड़े गेम्स में फ्रेश भी रखना होगा. तो आई एम श्योर जो यूर्गन क्लॉप एक बहुत ही फैंटास्टिक मैनेजर है. एंड या आई एम श्योर ही विल बी अप फॉर दिस चैलेंज. तो या गाइज, दैट्स ट्रू।
मेरे तरफ से that's it. Again, by anything that you want to add before we wind up the video? हाँ, मैं अभी पहले बता रहा था ना आपको, लाइक बार्सिलोना वाज नॉट in touch हम्म, with like any transfers. Now they're हम्म. considering to get powered. अरे यार क्यों इस मैं ठीक है यार, मतलब एवरेज प्लेयर है यार, वाई Yeah, वाई he's not a yeah. Even I उससे अच्छा तुम want to यार consider him. समर तक वेट करो और पाउट वाले जैसे प्लेयर को ले लो ना Yeah, यार तुम। yeah, क्यों बेंजामिन पावार्ड यार, exactly. नहीं यार। इफ So he's a World आर्सेनल Cup विन winner, ना? दे विल विन द लीग, एमशे Yeah, बोल रहा देखते हैं है। यार. आर्सेनल नहीं जीतेगा भाई, We all आर्सेनल तो know नहीं how जीतेगा लीग this. को। We all know how गारंटी Arsenal is. गारंटी guarantee, definitely they will not win. They'll do well. They'll do well. They'll come second. I know they'll do well, and it will be a very good progression. And we have to give Yeah. them credit. They have played fantastic. Arteta पे trust दिखा कर उन्होंने जो अच्छा काम किया है. Hmm. They could have easily sacked Arteta. But they kept the trust in him, and it's paying off. It's paying off really well. They backed him, and now I think if not this season, नहीं तो next season definitely वो लोग title challenge करेंगे. अभी भी टाइटल चैलेंज में Hmm. तो है ही वो लोग, बट आई थिंक नेक्स्ट सीजन दे विल बी मच बेटर, मच स्ट्रॉन्गर, एंड दे Yeah. विल हैव लॉट मोर चांसेस। बट अगेन यू कैन नॉट प्रेडिक्ट एनीथिंग बिकॉज कुछ भी हो सकता है। यस, तो आप Yeah. Agreed. बेंजामिन पवार के बारे में बोल रहे थे। आपको लगता है कि अच्छा Hmm. साइनिंग है बेंजामिन पवार है बार्सिलोना? How old is he? Like 24, 25 है ना? कितना है? I don't know. How old is he? थर्टी Let me थर्टी just है, check. 30 है। इज नॉट यंग, इज नॉट यंग, He's not डेफिनेटली young. नॉट यंग। ना ना। चेक कर लेता हूँ उसका. Let me just check. Benjamin Pavard 26 है. So he's going to be ठीक है 27 बट next यार year. मुझे एवरेज लगता है, एवरेज प्लेयर लगता है वो। 26 ईयर्स है, I mean और मुझे for इतना like if कुछ he खास नहीं can be लगता। a squad player. भाई बंडस लीगा में वो कुछ कर नहीं पाया यार, तो ला लीगा में मुझे लगता है कुछ कर पाएगा वो भी। ऐसे टीम में बायर म्यूनिख जो डोमिनेट करती है वीक इन वीक आउट, उसमें वो झंडे Hmm. गाड़ नहीं पाया, तो यार बार्सिलोना में तो आई थिंक सेंसिबल I सेंटर would have बैक साइन actually करो यार preferred ये। हम्म, I would have actually preferred Nahuel Molina from Argentina to be Barcelona fullback. मोलेना Hmm. फुल बैक तो ठीक है, फुल बैक सेंटर बैक ये बेंजामिन पवार इज मोर लाइक जूल्स कुंडे टाइप प्लेयर है। कैन प्ले सेंटर Yeah. बैक, कैन प्ले एज राइट बैक, मोस्टली Yeah. राइट बैक खेलता है, बट क्लियर प्ले सेंटर Hmm. बैक एज वेल। बट हाँ यार, अच्छा Yeah, अच्छा but राइट बैक that साइन करो यार। Barcelona needs that replacement for Jordi Alba, na? Jordi Alba is not having that वो तो लेफ्ट like बैक है winning भाई, role. वो तो लेफ्ट बैक है Yeah. यार। लेफ्ट बैक Hmm. तो तुमको अच्छे से मिल जाएंगे यार। आई थिंक उनके पास बाल्डे तो Hmm. है ही, राइट, बाल्डे तो है ही। और वो Balde, क्या yeah. नाम है उसका, ओलोंजो है, ओलोंजो। Alonso. हाँ तो Hmm. अभी तो But I think वो squad depth के आई लिए थिंक रख रहा होगा बारसा. आई बारसा थिंक must be like राइट considering वो squad depth. बैक नहीं है तुम्हारे पास, राइट, तुम्हारे पास राइट बैक नहीं है, राइट। है ना? राइट पे देखो. I mean both center रोberto backs are खेलता है basically पता क्या और है? कुंडे खेलता है। हम्म, हाँ. Kunde is like Barcelona's like मेकशिफ्ट। full back. Yeah. हम्म, And बाकी आई center थिंक back is यू like हैव Araujo and वो Christensen. Christensen are like क्रिस्टेंसन main है, center back. एरिक गार्सिया भी है। हम्म, Garcia is like second center back. हम्म। तो आई थिंक यू तुमको कुंडे को सेंटर में खिलाना चाहिए, एंड आई थिंक यू शुड गेट अ गुड राइट बैक। देयर आर मेनी राइट बैक, गुड राइट बैक्स अवेलेबल। ये है क्या नाम है, जेरेमी फ्रिम्पोंग अवेलेबल है। फिर Hmm. वो सेल्टिक का क्या नाम है उसका, स्कॉटिश यूरानोविच, वो अवेलेबल है। Uran, तो yeah, Uranovic is like 27 years. मतलब वो ज़्यादा से ज़्यादा बस will give ठीक है। like 5 seasons. तो But I would have actually preferred Guardiol. Guardiol is like a tall center back. गॉर्डियोल भाई सेंटर बैक है, तुमको राइट, यू हैव टू नीड अ हाँ, but गुड मतलब you can राइट बैक चाहिए। still shift this guy ना, क्या नाम है इसका, Araujo as नहीं like a यार, full क्यों back. He can play as क्यों a क्यों full back. करना है वो, Araujo. क्यों करना है, स्पेशलिस्ट विंग बैक लो ना यार। फिर वो बिग गेम्स में कॉम्प्रोमाइज हो जाता है। यू नीड टू हैव वन स्पेशलिस्ट फुल Hmm. बैक, एक That's स्पेशल true. फुल बैक चाहिए। That's true. एंड आई थिंक दो हॉलैंड के दोनों राइट बैक्स अवेलेबल है, फ्रिम्पोंग और दूसरा जो स्टार्ट करता है क्या नाम है, इंटर मिलान के लिए खेलता है, फॉरगॉट हिज नेम। Dumfries. हाँ, डम्फ्रीज इज अवेलेबल, फ्रिम्पोंग इज अवेलेबल, अच्छे अच्छे प्लेयर्स यार। Yeah, एंड but आई थिंक Dumfries पता है, Dumfries का issue पता है क्या है, मेरे को क्या लगता है, he gets like very caught up
in that battle of Hmm. yeah, Hmm. with your wing back, not wing back, with your wingers and midfielders, because उसका वो Hmm. एक Hmm. position छूट जाता है ना, so he doesn't, Hmm. he's not able to track Track back. back. So that is a Hmm. 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 so that is the biggest issue for him. Overall, वैसे तो मतलब he's Hmm. a good what do you call full back, but I don't see him going to like Hmm. Barcelona. Hmm. Hmm. तो मेरे को वो ठीक है. issue लग रहा Let's see. I think Barcelona need a good fullback, not proper fullback, not a है. makeshift one. Yeah. Because already they उनके Hmm. पास दो makeshift है, Kunde और Araujo. Yeah. I think right it's time they high time they buy a top wing back. A club like Barcelona should not be playing with a makeshift wing back. When they are Yeah. getting so many players, they should have a top wing back. So let's see how that turns out to be. But Yeah. yes, That's that's all from our end. Agrim bhai, thank you very much for joining. Thank you, Mshe. well. Nunez or Lukaku, who's worse? I think Lukaku. No, no, Lakaka. 100% Lukaku. न्यूनेज Lukaku. न्यूनेज होगा बहुत टाइम है न्यूनेज 22-23 साल हाँ. का ये बहुत टाइम है उसके पास अच्छा प्लेयर है ही विल डू वेल गिव हिम टाइम लुकाकू तो भाई Yeah. इज वेरी लेजी भाई लुकाकू के पास ना कोई एफर्ट लेवल ही नहीं है ही इज गुड विद फिनिशिंग एंड गेटिंग इनसाइड द बॉक्स उसका फिजिक अच्छा है बट लेजी बहुत है एंड उसका मतलब Yeah. एटीट्यूड इश्यूज भी है उसका बहुत तो Yeah. as a player, I think Nunez is a lot better. Nunez will do well. Give him some time. Yeah. 6 महीने ही हुए. You can't judge him on the basis of 6 months. Yeah. Lukaku Yeah. has been shitting the bed for the last 2 years. So I think Yeah. easily Lukaku. Lukaku is the worst. इतना चांस मिलने के बाद, I mean, no, no, Nah, nah. no player He's played for has very many good chances. clubs. He's played Good for clubs, but very good clubs. didn't go through. Nothing And worked out. yeah. Thank you guys. ठीक है. That's it. Guys, make sure that you subscribe to our channel, bottom right corner. वीडियो अच्छा लगे तो Yeah. लाइक कर देना वीडियो को कमेंट सेक्शन में बताओ कि who do you think is going to be the hottest property in January transfer window and Mm. your opinion how the World Cup is going to affect the Premier League and the other leagues, the club football कैसे affect होगा. Great streak. Amshe, good night, Repinaldo, Divya bhai. Good night, bye. Good night. Good night. We'll see you on Monday. Monday रात को जरूर आना एमशी भाई. हम मैच Love देखते name. देखते स्ट्रीम करेंगे मजा आएगा Okay. Sorry. एंड Yes. या गुड नाइट गाइस थैंक यू वेरी मच बाय Good night.